No matter how united the INDI bloc projects itself to be, key issues continue to split the grouping. Time and again, the difference in ideology puts parties in a spot. The latest is a series of controversial remarks by senior Karnataka Minister on Freedom fighter Vinayak Damodar Das, Veer Savarkar. Dinesh Gundu Rao triggered a storm as he called Veer Savarkar a beef eater who did not oppose cow slaughter. He even compared the freedom fighter unfavorably to Muhammad Ali Jinnah, even claiming that Jinnah wasn't a fundamentalist while Savarkar was. While Gundu Rao remained defiant on his stance despite criticism from the BJP, it was the Congress party's own ally Uddhav Sena that came down heavily on him. First up, let's tell you what triggered the entire political storm. Here's what Dinesh Gundu Rao said. Savarkar or ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. But he was a non-veg eater and he was not against cow slaughter. ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟೇ ಒಂದು ರೀತಿ. ಬಟ್ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೀಫು ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. But definitely as a Brahmin he was eating meat and he was openly propagating eating meat. Even Jinnah was also another extreme. He was never a hardcore Islamist believer. He used to drink wine or even pork tintadru anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So but he becomes the Muslim icon. Jinnah ge on fundamentalist irliಲ್ಲ, but Savarkar is a fundamentalist. Now, as the BJP objected to the statements and demanded an apology, Dinesh Gundu Rao remained defiant. Though he appeared to dilute the comparison vis-a-vis Jinnah, he took to social media to say, as usual, there is no space for informed opinions in this media-frenzy world. And I quote him, he said, all I said was that Gandhi was a devout Hindu and Savarkar an atheist. Gandhi was very religious and had many irrational views, but Savarkar was rationalist and held many scientific views. Gandhi was vegetarian and Savarkar a non-vegetarian. Gandhi was a cow worshipper and Savarkar did not believe in cow worship. Gandhi was democratic and Savarkar a fundamentalist. Gandhi held that the country belonged to all religions and Savarkar believed in only Hindu Rashtra. I said, to defeat Savarkarvad, we need Gandhivad. And finally, on beef, all I said was that some people claim that Savarkar also ate beef. I never said he ate beef. But it's not just the BJP that was up in arms against the Congress leader. After the insult to the Hindutva icon, Congress's own ally, the Uddhav Sena, also objected to the statements. Remember, time and again, the allies have sparred over Savarkar, while the Congress and Rahul Gandhi fire insult after insult against the freedom fighter. The Uddhav Thackeray faction has tried to insist that insult to Savarkar will not be tolerated. मुझे लगता है ये बातें अभी करने फिजूल की बातें हैं। सारे जो महापुरुष थे उन्होंने जो अपना काम किया है वो करके दिखाया है। अब वो हमारे और देख रहे होंगे ऊपर से कि हम क्या कर रहे हैं इस देश के लिए, हम कौन सी राह अपना रहे हैं। और मुझे लगता है कि भूतकाल में रहने से अच्छा है भविष्य को देखें और वर्तमान को देखें, वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं उस पर बात किए तो अच्छा है। सावरकर साहब पर इंदिरा गांधी जी का बयान आपको पता है, वो उनके बारे में बता चुके कि महान क्रांतिकारी थे, बहुत उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। तब इंदिरा गांधी जी से तो बड़े गुणवंत गुंडा राव जी नहीं है ना, उनसे बड़े तो नहीं है, तो उनको अपने नेताओं से सीखना चाहिए। और अभी भी सुशील कुमार शिंदे जी भी कह रहे हैं कि सावरकर साहब ने मेहनत की थी, त्याग बलिदान, तो ये सब सीखना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। बीजेपी को घेरो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की अच्छी सरकार चल रही है, बीजेपी को घेरो ताकि 10-20 साल वहां डटे रहो। ऐसी हल्की बयानबाजी से राजनीति में मैं सोचता हूं नेताओं को बचना चाहिए। But Uddhav Sena's historical ally, the BJP, has termed this as just an empty threat by the UBT. The BJP has challenged Uddhav Sena to break its ties with Congress and INDI bloc if it is genuinely so aggrieved. कांग्रेस पार्टी के दिनेश गुंडू राव जी सावरकर को कहते हैं कि सावरकर फंडामेंटलिस्ट थे, कट्टरपंथी थे, पर जिन्ना कट्टरपंथी या फंडामेंटलिस्ट नहीं थे। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। गुंडू राव जी ने सावरकर जी के विषय में और भी बहुत सारी बातें बोली है जिसका खंडन उनके परिवार के लोगों ने किया है, पर सावरकर का बार बार अपमान ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। Remember, Savarkar is at the heart of the ideology of Shiv Sena, and this face-off comes right ahead of the Maharashtra elections. A divisive figure in modern Indian politics, Savarkar is often represented by the Congress as someone who compromised with the British rule and was a British stooge rather than a freedom fighter. ये लोग जो है इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है।
ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सावरकर जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वो एकदम निंदनीय है, उनका अपमान। मैं कांग्रेस को बता देना चाहता हूं, उनको धमकी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के लोग सावरकर जी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और बार बार अगर यूं ही सावरकर जी का अपमान करते रहे तो एक दिन पूरी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के लोग जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो ऐसे सावरकर जी का अपमान करने से कांग्रेस पार्टी बाज है। कांग्रेस पार्टी और उनके कई नेता, राहुल गांधी हो या दिनेश गुंडू राव हो, लगातार स्वतंत्र वीर सावरकर जी जो एक देशभक्त है और स्वतंत्र सेनानी हैं, उनका अपमान करते हैं। अब उन्होंने एक दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी गौ मांस खाते थे। ये बात के लिए तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को तो माफी मांगनी होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी जो लगातार स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान करती है, क्या उद्धव ठाकरे जी की पार्टी इससे सहमत है? So the Uddhav Sena has made its stand very clear, while Congress is still doing the balancing act, saying Jinnah and Savarkar were both fundamentalists. That's the reaction coming in from the Congress leaders. Meanwhile, Shinde Sena has called out MVA. Milind Deora says MVA alliance is only for money and power. We should look towards our future. But it is also a fact that Jinnah gave two nations theory, and at the same time Savarkar ji also gave the same two nations theory. There is no doubt about it. So saying that Jinnah was not a fundamentalist but Savarkar was, how does this make sense? No, both were fundamentalist. Jinnah used to say, what is the meaning of two nations theory? Two nation theory means there are two nations, and only a fundamentalist can say like this. So Jinnah was fundamentalist, and at the same time Savarkar was also a fundamentalist. What has the Congress party's leaders, what have they said about Veer Savarkar is well known. What they did in Andaman Nicobar and Port Blair Airport is well known to the people of Maharashtra. What happened in 2019 when MVA was formed, it was an unnatural alliance. It was an alliance only for money, only for power, and that will be exposed in the days to come. Thank you. I'm not surprised with what the Congress says, but what UBT people say, what Uddhav Thackeray says is because he himself is confused over all these things. And now, because when he comes here to Savarkar Smarak, he speaks in a different language. But when he sits with the Congress, that time he keeps mum over it. So this hypocrisy of Uddhav Thackeray has been exposed time and again.